Good morning, class 12th. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to start the last topic of the chapter number 6, and that is the mutual inductance. Today one more topic is there, the AC generator, and we will again discuss about the AC generator that we have studied in the class 10. उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. So this we can consider as a last topic of this chapter, that is called the mutual inductance. Before starting the topic, we just go the recap of the chapter what we have discussed in the last classes. In the last some classes we have discussed there about the Faraday's law. Before starting at the starting of the chapter we have discussed about the Faraday's law. A lot of experiment was there that was made by the Michael Faraday. उन्होंने कई ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया था हाउ द करंट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ही हैव डिड्यूस्ड द फॉर्मूला दैट द चेंज इन अ फ्लक्स will create the EMF, and that EMF will produce the current, and the formula was there, EMF is equal to minus n d phi upon dt. Then after we have discussed about the lot of a topic, Lenz's law and energy conservation, and a lot of a topic was there. In the last class we have discussed about the self inductance, and we have reduced the formula that EMF is equal to minus L di upon dt. That was the class we have discussed till now. Now today we are going to discuss here about the mutual inductance. Mutual inductance is a very simple concept, beta, that is related to the back side of the portion. If you have not seen the last videos, just go through the playlist and search over there the last video of this class, so you will get the topic very clearly. Now let me start the topic. We should know about the mutual inductance. What is the mutual inductance here? We know, we can see here the two coils are given here. The first coil is here connected with the battery source and in a series with the inductance, and the second coil is here connected with the galvanometer and then in a series with the inductance. We know very well when we switch on the battery source, the current will flow here. यहाँ पर current का flow होगा. As the current will rotate in a circular coil, we will see here a magnetic field is generated here. You know very well, a magnetic field is generated here. This magnetic field is somewhere related to this coil. ये magnetic field कहीं ना कहीं इस coil से relate करेगा, like this. This magnetic field will relate somewhere to this coil, and this change in a magnetic field will create the EMF, electromotive force, and due to this EMF a small amount of a current is generated, and that is called the induced current. और यही हमारा induced current है. ये सारे क्लासेस में लास्ट कुछ क्लासेस में हमने बार बार यही चीज़ पढ़ा था, and that we are doing here. Now in the case of your NCERT book, if you talk about the NCERT book, you will get such type of the circuit. इसका मतलब क्या है कि अगर हम सर्किट को अलग अलग करें या एक ही करें, both are the same here. In your NCERT book, this type of the circuit is given there. Internal coil is connected with the galvanometer, and the external coil is connected with the battery source. When we switch on the battery source, the lot amount of a current will flow from here. Due to this current, a small amount of a magnetic field is produced there, and the production of a magnetic field will create a induced current, and that current is flowing from the galvanometer. Now we are going to discuss here on the same. If we talk about this two circuit, suppose this is the one and this is the second circuit. अगर हम दो सर्किट की बात करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट सर्किट है और यहाँ पर ये सेकंड सर्किट है. Here we are going to discuss all about the concept here. Now in this case what we are seeing here, जाई ऐसे करो, both are the same here. बेटा remember that you should know about the concept, not about the ratification process. आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, रटाफिकेशन नहीं होना चाहिए. यानी जैसा एनसीईआरटी बुक में दिया या जैसा अदर बुक में दिया हुआ वो जरूरी नहीं कि वही हम लिखें तो वही हमें मार्क्स मिलेगा. इफ़ यू आर राइटिंग द राइट कॉन्सेप्ट एंड द राइट टर्म्स देयर, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फुल मार्क्स, यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे. सो लेट वी स्टार्ट द डेरिवेशन. Here derivation of the mutual inductance, and here we have the two coil. This one is the first coil and this one is the second coil.
In the first coil, the battery source is connected here, so that's why the magnetic field will be generated. In the second coil, due to the passage of the magnetic field, you will get the current here. That is called the induced current. Suppose that we are talking about this current. Suppose this one is the first and this one is the second. ऐसे suppose कर लेते हैं. Second and this one is the first. Due to this change in a flux, induced current is generated here. That is the I1. So ये I1 किसकी वजह से जनरेट हुआ? Because of a change in a flux phi2. ये हमारा सेकेंड सर्किट है, ये हमारा फर्स्ट सर्किट है. ये I1 किसकी वजह से जनरेट हुआ? Because of the change in a flux phi2. phi2 फ्लक्स के चेंजेस की वजह से हमारा I1 जनरेट हुआ. You know very well. Now what we can write here? We can write here phi2 is directly proportional to I1. यही हम बार बार पीछे करते आए हैं कि चेंज इन फ्लक्स विल क्रिएट द EMF एंड दैट EMF विल क्रिएट द करंट. सो वी कैन से दिस करंट इज जनरेटेड व्हाई विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लक्स चेंज इन दिस फ्लक्स phi2 फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट I1 हमारा जनरेट हुआ. सो इफ वी विल रिमूव दिस proportionality sign, definitely you are going to get one constant value there, and the constant value will be here phi2 is equal to M21 of I1, and this is called the mutual inductance. म्यूचुअल वर्ड से बेटा कंफ्यूज नहीं होना. म्यूचुअल वर्ड बहुत ही सिंपल सा वर्ड है. एक इंडक्शन वर्ड को हमें क्लियर रखना है. इंडक्शन के आगे म्यूचुअल लग गया, इट मीन्स टू कॉइल्स आर कोरिलेटेड देयर. अगर इंडक्टेंस के आगे सेल्फ लग गया, इट मीन्स ओनली सिंगल कॉइल विल बी देयर. सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सिंगल कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब टू कॉइल्स रिलेटेड है वहां पर. सो दिस इज द M21 एंड दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू कॉइल. वी कैन से M21 विल बी mutual inductance of coil 2 with respect to 1. second coil का first coil with respect to the 1 with respect to the 2. सेकेंड कॉइल में कितना इंडक्टेंस जनरेट हुआ विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉइल. फर्स्ट कॉइल में कितना इंडक्टेंस जनरेट हुआ विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड कॉइल. सेकेंड कॉइल में इंडक्टेंस चेंज होने की वजह से फर्स्ट कॉइल में कितना करंट जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो वी कैन ऑल्सो राइट हियर M21. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हियर M21? इट विल बी द phi2 अपॉन phi1. ये हमारा सिंगल टर्न ऑफ कॉइल के लिए है. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल विल बी N2. अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, अब देखो इसमें करंट किसकी वजह से है? बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड. जितना ज़्यादा ये फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा. इट मीन्स इसमें फ्लक्स जितना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमारा करंट जनरेट होगा. यानी करंट किसके रिलेटेड वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस कॉइल, एंड दिस इज द N2 एंड दिस इज द फ्लक्स नंबर ऑफ कॉइल इज N2. So we can write here mutual inductance for 2-1 is equal to N2 of phi2 upon I1. ये n number of coils के लिए है, n number of turns के लिए है. Now cross multiply them, we will get here M21 into I1 is equal to N2 phi2. Now differentiating on both side, अब दोनों साइड में differentiate करेंगे. Then M21 is a constant. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था. हियर विल बी द di1 अपॉन dt is equal to N2 is the constant and here will be the d phi2 upon dt. This will be the value here. Now we know N2 d phi2 upon dt will be the change in a flux with respect to the time is called the induced EMF. इसको EMF बोलते हैं. Then M21 di1 upon dt is equal to minus EMF of second. This is the formula here. Then induced EMF on the second coil is equal to minus M21 dy1 I1 upon dt, and that amount of EMF is generated and that we need to study here. और यही हमारा EMF जनरेट होता है और यही हमें यहाँ पे पढ़ना था. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा. जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस टॉपिक एंड नोट डाउन देयर. अब बेटा बात आती है कि हाउ वी नीड टू राइट द थ्योरी हियर.
हमें थ्योरी कैसे लिखना है। थ्योरी स्टार्ट करने के लिए बेटा हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट विद द डिफाइनिंग द फिगर हेयर। कैसे स्टार्ट करेंगे, सपोज करेंगे हमें इसकी थ्योरी लिखनी है। कैसे स्टार्ट करते हैं, फिगर अगर अच्छे से हमें पता है तो हम थ्योरी हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सपोज दैट वी नीड टू राइट द थ्योरी हेयर। सो लेट वी स्टार्ट द थ्योरी हाउ वी कैन राइट हेयर। लेट अस सपोज टू कॉइल with the term N2 and N1 is given here. N2 and N1 is given here. N2 coil consists with the battery source. N2 coil हमारा battery source से connected है in a series with that and situated aside with the coil N1, and the coil N1 is connected with the galvanometer. As the battery source is switched on, the current will flow from the circuit, and due to the passage of a current in a coil N2, the induced EMF or electromotive force will be generated. This EMF will pass somewhere from the coil N1. Due to the passage of a EMF from the coil N1, the change will be the flux will take place, and due to this change, the current I1 will be generated. So this current I1 is correlated with the number of turns N2. So we can write from here phi 2 is directly proportional to I1. That is the way how we can write the theory. Then do after this derivation, and now the last part is here how we will write the unit here. कैसे हम यहाँ पे unit लिखेंगे. The most common thing is here inductance. बेटा confuse नहीं होना, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, हर जगह एक ही यूनिट होगा एंड दैट इज कॉल्ड द हेनरी. ओके, तो हेनरी इसकी भी यूनिट होगी, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो. सो हेनरी यूनिट है. ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक. लेट वी मूव टू द एसी जनरेटर. Now class, the last topic that we need to discuss here is the AC generator. It is a very simplified topic, and that is the topic related to the class 10. We have learned earlier there all that thing. We are going to again revise once again here. थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट है, लेकिन वही सारा चीज़ें जो क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस. वाई वी आर लर्निंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एप्लीकेशन कहाँ पर है. सो एप्लीकेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन वी कैन से दैट इज द ट्रांसफॉर्मर, एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एसी अल्टरनेटिंग करंट. वहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और वो उसका सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो याद रखना बेटा, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर, एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास. सपोज दैट now we are going to learn about the generator, AC generator. This is the concept of this is the system of a AC generator. Here we have two magnets. This is the north pole and this one is the south pole. A coil is situated between that. It is winded with the number of turns. The coil is winded with the number of turns. This is the shaft and the end of the coil is connected with the slip rings. ये हमारे स्लिप रिंग्स हैं और ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है. बेटा जनरेटर का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. अब इफ़ यू हैव सॉ द जनरेटर इन योर होम, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको रोटेट कराते हैं. जैसे रोटेशन कराना स्टार्ट करते हैं द एनर्जी विल बी जनरेटेड. अब ये कैसे होता है, ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है, क्या होता कैसे है. Now this is the magnet. You know the property of a magnet. A magnetic lines of force will start from the north pole and end toward the south pole. You know this concept here. Magnetic lines of forces start from the north pole and ends toward the south pole. Now as we rotate the generator, then we will apply the Fleming's left hand rule here. In the case of a Fleming's left hand rule, this is the force, this is the magnetic field and this is the value of current here. ये force है, ये magnetic field है और ये current है. So देखो,
force, magnetic field and current. We will put like this, इसको हम ऐसे पुट करेंगे. This is the direction of the magnetic field. This is the direction of a current. So what is the direction of force here? That is inverse. जैसे ही हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर लगा रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? इट विल फ्लो इन दिस साइड. ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट का. इन दिस पार्ट अगेन वी विल अप्लाई हियर एफ बी आई. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स. इन दिस साइड द फोर्स इज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन. फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं. The direction of magnetic field is like this. Then what is the direction of the current? That is in the downwards direction. This is the flow of current. And here the force is applied in upward direction. ऐसा क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें फोर्स से ही क्या जनरेट करना है? हमें फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना है. और फोर्स से हम कैसे जनरेट करेंगे? इफ वी विल किसी भी कॉइल को हमें रोटेट कराना, सपोज दैट दिस इज द कॉइल. इसको रोटेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अप्लाई द कपल फोर्स. एक इधर डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स और इधर डायरेक्शन में अपवर्ड्स. कपल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये रोटेट होता है. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द कपल फोर्स. मीन्स एक साइड डाउनवर्ड्स और एक साइड अपवर्ड्स, तभी ये फोर्स हमारा रोटेशन के लिए अप्लाई करेगा. और दिस इज कॉल्ड द कपल फोर्स. इसको हम कपल फोर्स कहते हैं, ये फोर्स ऑफ कपल कहते हैं. ठीक है. और ये हमारा इसको क्या करेगा? कॉइल को रोटेट करा देगा. एज द कॉइल इज रोटेटेड देयर, the current will flow and the flow of the current will be collected here. Here we have a slip rings. What is the concept of the slip rings? Slip rings is used here. In the case of a slip rings, in the internal part the brushes are given here, carbon brushes is given here, that used to collect the amount of the current that is generated here. अगर हम इसको वायर को से कनेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली इट विल बी रोटेटेड. वो हमारा वायर रोटेट कर जाएगा और हमारा यहाँ पे जनरेट नहीं होगा. So in this case the amount of current is collected by the slip rings. जो भी यहाँ पे करंट है वो उसको कौन कलेक्ट करेगा? स्लिप रिंग्स कलेक्ट करेंगे. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द एसी जनरेटर. ये हमारा सारा एसी जनरेटर के बारे में था. बेटा आपको करना क्या है? जस्ट रीड दिस टॉपिक और इसके नोट्स तैयार करने हैं. दैट विल बी होमवर्क. रीड दिस टॉपिक, राइट द, इसमें हमें टॉपिक कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है. First you need to write the theory portion, then principle, in which principle it is based, then afterward you need to write the construction and then working of the AC generator, and that all is given in the class 10th book, and that is similar to here also. So that's all for this chapter, and this chapter has been completed. अब इसके बाद हमारे कुछ NCERT क्वेश्चंस हैं, उसको बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं. नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वी विल टच ऑल दोज क्वेश्चंस. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एसी जनरेटर, सॉरी एसी ऑल्टरनेटिंग करंट. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसी करंट. तो बेटा एग्जाम में जो भी आएगा, एग्जाम में आपके टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 1 to 6 आ रहे हैं और यहीं तक वो सफिशिएंट है. यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ाई करना है. एग्जाम पेपर बहुत ही सिंप्लीफाइड होगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना उसकी. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस क्लास. बाय बाय, टेक केयर, goodbye.